अपने आप को ये आपने बताना है कि शाम हो रही है, दिन ख़त्म हो रहा है, ये मी टाइम नहीं है, ये मेरी बॉडी का टाइम है। आप नहीं अवेलेबल हो सकते 24/7 किसी के लिए भी, अनलेस इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी। सो आपने ऑफिस की लाइट्स तो ऑफ कर दी, बट इसकी लाइट्स को भी ऑफ करें। और इसीलिए हम इंसोम्निया के पेशेंट्स बनते जा रहे हैं यंग एज में। सो ये है 4 बर्नर की थ्योरी कि आपने किसी एक भी चूल्हे को बंद नहीं करना, कि आपने प्रायोरिटाइज करना है किस वक्त क्या प्रायोरिटी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं। हम शब एक पका रहे हैं, सारी डिशेज इकट्ठी, ठीक है, और इसीलिए सब जल रही हैं। What are we going to do today? We're going to talk on, what do you think? Sorry? Work life, office life. Work routine, office routine. So in this picture, a man trying to maintain a balancing act between... Clapping for a very wrong description. Because he's blind. How can a blind person create balance? But yes, you're right. I'm just kidding. We are going to talk about this work-life balance. It's a hot topic and it's an important topic. Why it is hot, why it is important, ये आप मुझे बताएंगे मेरी बनाई हुई slides को पढ़ के, ठीक है? But my very first question is, and I would appreciate अगर आप इनमें इस बात का जवाब दें कि यहाँ पे yes, there is a male totally lost. As you can see, he's blindfolded, right? So work, office, business, life, home, health, and he doesn't know where to go. He seems lost. But of course, alhamdulillah, men are managing it. Why there is no female? Why only a male? क्यों नहीं है यहाँ पे कोई? जी बताइएगा. Discrimination. Describing a now women are talking. Yes? और कुछ बताइए? Maybe women can maintain and use a work-life balance. Because women, again, because women can maintain a balance between life and work, तो उनको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे डिपेक्ट करने की। ये जो टमक तो यहाँ मार रही हैं सिर्फ मर्द हजरात हैं। Okay? ठीक हो गया? ख़वातीन वर्क फोर्स में, प्रोफेशनल लाइफ में अब आई हैं। It's recent, it's not a very old thing, right? तो पहले क्या हो रहा था कि ख़वातीन सिर्फ घर में थीं और घर के अंदर भी they were juggling between a lot of things. For example, बच्चे, मियाँ, घर, रिश्तेदार, नंद, सास, ये अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं, फुफियाँ तो बहुत कुछ, अपनी हेल्थ, अपनी खुशियाँ, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स। लेकिन ये वाला हिस्सा उनकी ज़िंदगी में नहीं था, एंड दिस इज़ समथिंग रीसेंट। अब ख़वातीन जो हैं, जब से वो वर्क फोर्स में आई हैं, जब से वो इंडस्ट्री में, मार्केट में एंटर हुई हैं, सो दे आर नॉट जस्ट ब्लाइंड, दे आर इन केओस। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ख़वातीन से हैंडल नहीं हो पा रहा, लेकिन इनसे ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, बिकॉज नाउ दे हैव वर्क लाइफ projects which they have to bring back home, and then life, and then family, and then husband, and then nand, and then saas, and then pupiyan, and then events, and the list goes on and on and on, right? So yes, now welcome to the circus of life is particularly for the womanhood, क्योंकि ये तो बेचारे बहुत सदियों से भुगत ही रहे थे। ठीक हो गया? So this is a thorny issue. Why it is an important issue? Why is it important for us to have this balance between work and life? इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे। मैं आपको 2 स्लाइड्स दिखाऊंगी और आप में से कोई मुझे बताएगा कि वर्क और लाइफ बैलेंस का टॉपिक हॉट क्यों है, क्यों हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। भाई ज़िंदगी चल रही है, वर्क चल रहा है तो चल रहे हैं, तो जैसा चल रहा है चल ही रहा है ना, दुनिया में कौन सी क़यामत आ गई है। इसको सिर्फ आप ख़वातीन के नज़रिए से मत देखिए, दोनों के लिहाज से देखिएगा। It is very important for us, it is very important for us to think about this topic or to discuss it with ourselves and among our friends, because we are social animals. हम एक entity हैं और हमारे से इर्द गिर्द जुड़े हुए institutions ही नहीं, इंसान भी हैं, घर भी हैं और बहुत कुछ है।
सो अगर हम मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, अगर हम क्वालिटी और क्वांटिटी का बैलेंस नहीं रख पाएंगे, तो सिर्फ मेरी हेल्थ और मेरी ज़िंदगी इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, मेरे से जुड़े काम, मेरे से जुड़े रिश्ते, मेरे से जुड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरे से जुड़े इंस्टीट्यूशंस सब ख़राब हो रहे हैं. एवरीथिंग देन crumbles down. All right, it collapses. So to avoid this collapse, we have to understand, we have to dig deep and delve into this topic of work-life balance. आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप बात कर लीजिए. Ma'am, I guess the basic reason of the imbalance between life and work is the increasing competition and thirst for power and money. As we know that there is the life of competition and level of competition, and when we see the competition, when we see people succeeding than us, then we try to succeed more than him. So we have to work hard, and we the have competition is cutthroat. So सब उसी दौड़ का हिस्सा है. Yes, that's why people are just focusing on their work rather than life. They are just spending their life on working hard just to achieve something. All right, आप में से किसी और ने हाथ खड़ा किया था. ये इनको आगे दे दीजिए प्लीज. Ma'am, as a human has a capacity to do work, doing work more than the capacity will cause mental illness as well as physical illness. And after illness, we, as you told us that when we got anxious or mental illness, it will cause damaging our relationship with our society. Exactly. हम सिर्फ मेंटली इल नहीं हो रहे हैं, हमारे से इर्द गिर्द हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे कोलीग्स, सब पे उसका इफेक्ट जा रहा है. What do you take out of this? Can I have it please so I can pass it on? What is this related with the topic work-life balance? 24/7. No. I would like you to please use this and then pass it on, please. Yes, sweetie. A person who is always available, who doesn't give time to himself or herself, and who's always indulged in whether family. Absolutely correct. Absolutely. आपने कुछ कहना था? Can you pass it on? We are not right now working, but still we are student, and our mind is 24/7 working. If we are not thinking about ourselves, then are we thinking about what we're going to do after graduation, and how can we deal with the different things that society has expected from us. So this is the what thing. Is society expecting, right? Okay. So you are absolutely right. When we talk about open 24/7, unfortunately, we have made ourselves available to the world 24/7. दोस्तों के लिए हाजिर जनाब, काम के लिए हाजिर जनाब, फेसबुक के लिए हाजिर जनाब. रात के 3 बजे भी पिंग हुआ तो हमने आंखें मलते हुए देखना है किसका मैसेज आया है, क्या दुनिया में नया धमाका हुआ है. We have to be there. The fear of missing out is so much overwhelming, right? हम उसके influence में हैं. But that is Gigi. Can we have the mic, please? There are no priorities. If you not plan your day, so sudden circumstances are going to plan your day. So in this way, if you don't have any priorities, so things you can say that can befall. They'll run into each other. Yes, they can plan your day, and then you can say the haphazard things are going to happen. Things would be haphazard. जी आप में से कोई एक इसको रीड करके एक्सप्लेन करेगा? Work is no longer a place, it's a state of mind. It's become less about when I turn off the light or office lights and more about when I turn off, at least mentally, the inbox. So it's just telling us that we are not in the office, working in the office. We are actually working all the time in our minds. जैसे आप लोगों ने कहा. Yes, so the work is all the time in our heads, and we can't ever get out of it. We're always thinking about new projects, how we can get more funds, more revenues. It's true, very true. Us. It also means, I guess, that it is our state of mind. It is like we can control what is work. If we allow that it is the end of any work, then we can shut it in our minds. If there is more to do, then we have to control by ourselves, because correct. The work never Absolutely ends. correct. So everybody has given their input correctly. That अपने आप को ये आपने बताना है कि शाम हो रही है, दिन ख़त्म हो रहा है, ये मी टाइम नहीं है, ये मेरी बॉडी का टाइम है, मी टाइम भी नहीं है अब वो आपका.
ठीक है. सो दिस इज अ मशीन विच इज वर्किंग डे आउट डे इन डे आउट. आपने उसको रेस्ट देना है. आप नहीं अवेलेबल हो सकते 24/7 किसी के लिए भी, अनलेस इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी आप अपने माँ के लिए, बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने काम के लिए, अपनी दोस्तों के लिए, फिल्मों के लिए, व्हाट्सएप के लिए, गूगल के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टा के लिए आप 24/7 नहीं है अवेलेबल. सो आपने ऑफिस की लाइट्स तो ऑफ कर दी, बट इसकी लाइट्स को भी ऑफ करें. और इसीलिए हम इंसोम्निया के पेशेंट्स बनते जा रहे हैं. यंग एज में हम वो बच्चे हैं जिसको रात को सोने से पहले चॉकलेट दे दी जाए और अब आप उसको बेड पे नहीं डाल पा रहे हैं. आप बेड पे लेटे हुए हैं लेकिन ये चल रहा है, आपके दिमाग में चीज़ें रेस कर रही हैं. कल पहनना क्या है, कल पकाना क्या है, कल बताना क्या है, कल सुनना क्या है, कल कौन कौन सी मूवीज़ देखनी है, कौन कौन सी वेबसाइट्स को जो है वो चेकआउट करना है अपने आर्टिकल के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, टीचर को कैसे आर्ग्यू करना है, टीचर को क्या जवाब देना है कि मैंने प्रोजेक्ट क्यों टाइम पे नहीं किया है, मेरी जॉब कौन सी है, इस जॉब के साथ हसल कौन सा, साइड हसल कौन सा स्टार्ट करूं, नया मोबाइल लेने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं. सो देयर इज जस्ट टू मच गोइंग ऑन, देयर इज जस्ट टू मच, राइट. वी हैव टू मच ऑन आवर प्लेट. वी हैव टू स्विच ऑफ द लाइट. सिर्फ बेडरूम की या ऑफिस की लाइट ऑफ करने से काम नहीं बनेगा. यू आर नॉट अवेलेबल, यू शुड नॉट बी अवेलेबल 24/7. Right? So that's an important thing. Can you explain this? I think it says that it's not about balance, it's about harmony. Like we should try to tell ourselves that we don't have to maintain balance all the time, but sometimes it can happen that sometimes we can give more importance to our personal life. Sometimes it can happen that we can give more time to our work life. Very good, thank you very much. जब हम last time 1-2 मिनट के लिए आपने एक बड़ा खूबसूरत कमेंट दिया था. I remember. Can I have your name? अतिया ने कहा कि life is not a pie chart. या पिज़्ज़े का पीस तो है, हो नहीं रहे कि इक्वल पीसेस मिल जाएंगे सबको, ठीक है. सो बैलेंस तो नहीं हो सकता ना. ये आपका जो है ना सीसॉ, ये ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ साथ साथ चले. आउट ऑफ क्वेश्चन है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है. सो जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ लें कि वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ एक फ्रेज़ है, आप इसको एक्वायर नहीं कर सकते, आप इसको ट्राई भी ना करें. हाँ, हार्मनी को ट्राई करें. हार्मनी क्या है उस पर हम बात करते हैं और उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से, कैन आई हैव योर नेम? खतीजा ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कभी कभी किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी होगी, प्रायोरिटी सेट करनी होगी. सो वील टॉक फर्दर ऑन दैट. सॉरी, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी. और वो डिफरेंट क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ. नॉट इम्पॉर्टेंट. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द 4 burner theory? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? चलो लेट मी एक्सप्लेन, फिर मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चंस पूछूंगी. Because you have to basically talk and participate. The 4 burner theory says this thing. 4 चूल्हे हैं, 4 चूल्हों के ऊपर आपने 4 डिशेस रखी हुई हैं, ठीक है. रिसोर्स क्या है? एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर आपकी चारों चीज़ें जो हैं वो पकनी चाहिए हैं. लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड क्या है? सुई गैस. तो अगर अब आप सुई गैस सारी डिशेस को इक्वली देंगे, क्योंकि आप तो बैलेंस देना चाह रहे हैं ना, तो आप चारे चूल्हों पे सुई गैस की अमाउंट एक ही रखेंगे तो क्या होगा? कोई भी डिश बन नहीं पाएगी. कोई चीज या तो कच्ची रह जाएगी या जल जाएगी. तो क्या करना चाहिए? ओके, नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू हैव ओपिनियन. हम नहीं चाह रहे कि हमारी कोई डिश कच्ची रह जाए, हम नहीं चाह रहे हमारी कोई डिश जल जाए. हमें पता है कि हमारा सुई गैस भी लिमिटेड है और उन डिशेस को पकाने का टाइम पीरियड भी लिमिटेड है. तो क्या करें? If we keep the 4 stoves, like 4 flames open, then equally distributing equal gas among the 4, then it's called as balance. If we want to जिसके ऊपर ज़्यादा हमें चाहिए, if we want to concentrate one dish to be make at earliest and the second one on later on, which requires less gas, or first one requires a more gas like high flame, so it comes under harmony. Things need our more time we have to give
priority to the one. Like in our life, if family needs our time more, then we have to give a time to our family more. If the workplace need more time, then we shift our time to our workplace, then minimize our time over the family. So it's under harmony. तो हम क्या करें, हमें क्या किसी एक चूल्हे की आंच तेज करके बाकी चूल्हे बंद कर देने चाहिए उस वक्त, और जब एक डिश बन जाए तो फिर उस वक्त दूसरा वाला? नहीं, ऐसा नहीं करना. क्यों, क्या करना है फिर? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दी पक जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको टाइम लगता है. ठीक है. उनके लिए ये होता है कि फ्लेम जो होता है हमें अकॉर्डिंगली रखना पड़ता है. ठीक है. हमें जो चीज़ ज़्यादा पकने पे टाइम ले और उसको ज़्यादा फ्लेम चाहिए तो हम उसके लिए हाई कर देंगे. और जो कुछ चीज़ें जल्दी पक जाती हैं और उनको थोड़ी फ्लेम चाहिए होती है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे. उसको चूल्हे से उतार के रख दें? नहीं, हम चारों में एडजस्टमेंट करेंगे कि हमारे पास पावर की है कि हम उसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं और हाई भी कर सकते हैं. वंडरफुल. जो डिश हमारी प्रायोरिटी है और जिसमें टाइम भी कम लगेगा उसको पहले कुक किया जाए, एंड देन जिसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और मतलब वो ना भी हो तो गुजारा चल जाएगा तो उसको थोड़ा सा बाद में किया जाए. Got it. Okay. So now let me show you another slide. All of the opinions and inputs that came from you people, they're spot on, very right. The point is कि हम बात कर रहे हैं dishes की. It's a very good simile or a metaphor you can say. जब हम अपनी work life की बात कर रहे हैं, so there are 4 burners. आपका काम है, आपकी family है, आपका health है, आपके friends, social life है. ठीक है, आपकी health के अंदर आपकी mental health है और आपकी फिजिकल हेल्थ है. मेंटल हेल्थ के अंदर आपका जहनी तवाजुन ही नहीं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रूम कर रहे हैं, आप और चीज़ें लर्न कर रहे हैं कि नहीं लर्न कर रहे हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द 4 बर्नर्स, इट सेज कि किसी एक की भी आंच को, जैसे आप लोगों ने कहा, बंद नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो तो फिर डिपॉजिट ख़त्म हो जाएगा, फिर नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी. बट व्हेन आई स्टार्ट माई डे एंड नाउ आई एम एट वर्क, सो उसकी सप्लाई, अब एज अ ह्यूमन मेरी supply क्या है? My time and my energy. My time and my energy. So when I am at work, I'm not going to have my mobile all the time in front of me. I'm not going to be available for my family and my friends and for Facebook and Insta. That time is for my office. I need to make sure that I am dedicated, I'm sincere, and I'm concentrating and making sure I'm able to produce what the desired result, what company wants from me. लेकिन चूंकि मैंने ये सोचा है कि मैंने बाकी आंच को चलते रहने देना है, तो the moment this session is over, will be over, I'll go and check my mobile. Is everything good at home? Anything problematic or not? When I am working, if my husband keeps calling, I should get alert, क्योंकि मैंने आंच बंद नहीं की हुई. I am connected. Then I'll check, is everything okay with him? Is everything good at home? अगर मेरे स्कूल से किसी का फ़ोन आता जा रहा है, I'll have to check because my burners are still on. लेकिन yes, one dish is my priority and that is my work. ठीक है? So ये है 4 burner की theory कि आपने किसी एक भी चूल्हे को बंद नहीं करना. But yes, as you all have mentioned very correctly, कि आपने prioritize करना है किस वक्त क्या priority है. एंड टू बी ऑनेस्ट, हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं. हमने गलत टाइमिंग चूज़ किए हुए हैं प्रायोरिटाइज के लिए, प्रायोरिटी देने के लिए, क्योंकि हम तो 24/7 अवेलेबल हैं. तो यही स्टार्ट ही हमारा गलत है. अब उस 24/7 में हमें नहीं पता हम किस किस को कितना कितना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हम सबको इकट्ठा टाइम दे रहे हैं. हम शब देग पका रहे हैं, सारी डिशेज इकट्ठी. ठीक है, और इसीलिए सब जल रही हैं. So our resources are limited time and energy to allocate. So intensity कम करनी पड़ेगी time और energy की किसी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देने के लिए. So this is what achieving harmony means, reflecting on the priorities and making conscious choices. Not because क्योंकि अब ये काम सामने आ गया तो अब ये कर लो. अब क्योंकि एकदम से मैं ये कर रहा था और अम्मी ने आवाज़ दी थी तो भाग के उसको छोड़ के मैं अम्मी की बात सुन लूँ. बॉस ने बुला लिया कि नहीं ये चीज़ पहले, तो मैं किसी प्रोजेक्ट पे किसी के लिए कुछ काम कर रही हूँ या कर रहा जो कि इम्पॉर्टेंट है, बट क्योंकि बॉस ने आवाज़ दी है या बॉस एंटर हो रहा है तो मैं फटाफट कुछ और शुरू कर दूँ. नो, मेक कॉन्शियस एफर्ट्स, बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर मेकिंग चॉइसेस. कैन एनीबडी प्लीज एक्सप्लेन दिस? First of all, there are 3 buckets.
It's like bucket list. So first one is the task that I must do that have some deadline, such as job deadline or academic deadline. Then comes tasks that I can avoid, such as household chores or any parties or gathering with friends and etc. And then our negotiable responsibility, which can be done and can be avoidable. There, I can non-negotiable. Oh, जिस पे negotiate नहीं कर सकते. That cannot be negotiated or compromised, such as family, children, or education, job. That very right, very rightly said. So yes, these are my buckets. आप अपनी buckets अपने लिहाज से बना सकते हैं. So let me try and explain what my buckets are. What I have done is I have made a few buckets. ठीक है? और मैं वीकली बेस पे, कभी कभी मंथली बेस पे उन बकेट्स को मुझे चेंज, उसमें जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ वो मुझे चेंज करनी होती हैं. सो नाउ माई वेरी फर्स्ट बकेट इज़ थिंग्स दैट आई हैव टू डू. आई डोंट हैव एनी चॉइस देयर, इवन इफ आई वांट टू, डजंट मैटर इफ आई वांट टू और नॉट, बट थिंग्स आई डू, आई मस्ट डू. फैमिली की टेक केयर है, जॉब मैं चाहूँ या ना चाहूँ, आई हैव टू डू जॉब बिकॉज आई हैव टू अर्न माई मनी, राइट? And children's education. So I have to earn so I can pay for their fee, and also because we're also taking care if their growth is going steady or not, if they are into education or not, if their copies are complete, if their diaries are updated, if there's any note from the children, from their teacher, if they are taking equal part in the extracurricular activities or not. So when I get back from my office, whether I'm tired or not, I need to take out time to go through their copies. I need to spend time with their diaries. I should give a call to their teacher on weekends. I have to sit with them to revise all that they have covered in the week. ठीक है? और उसके अंदर मैं एक lavish dinner को, एक friends की get together को side पे कर सकती हूँ. But weekend पे या during my weekdays, I have to make sure that my kids' education is not suffering because of my job, ताकि वो पढ़ाई में डाउन ना जाए. Then I have tasks that I can avoid. Household activities. अगर मुझे अपनी फ्रेंड्स से गैदरिंग करनी है तो मैं ऑर्डर करवा लूँगी फूड, मैं कुक नहीं करूँगी. डिशेज़ निकालूँ, कुक करूँ, उस पर टाइम लगाऊँ, फिर डिशेज़ को धोऊँ और फिर वापस रखूँ. इट्स वेरी टाइम टेकिंग. सो आई डिसाइड, दैट्स द चॉइस आई मेक. ठीक है? सो आई कैन अवॉइड इट. मैं गैदरिंग रखती ही नहीं नॉर्मली, मैं घर पे डिनर्स नहीं रखती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट. non-negotiable. हेल्थ अच्छी है, हेल्थ नहीं अच्छी है, टाइम कम है, टाइम ज़्यादा है, बट दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू डू. ये non-negotiable हैं. दिस इज फैमिली, दैट इज चिल्ड्रंस एजुकेशन, एंड देन माई जॉब. हाँ, मेरा कुर्रा निकल आता है 2-3 करोड़ का, तो ये जो जॉब है यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है. ठीक है? अगर मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ या I have a lot of other assistants, I have services with me, तो बहुत सारी चीज़ें avoid में जा सकती हैं. सो बकेट में से चीज़ें मूव करती रहेंगी. बट टू बी क्रिस्टल क्लियर कि आपने कितना चूल्हा किसको देना है, गैस की सप्लाई, इफ़ यू हैव बकेट्स इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज़ मच ईजियर. एंड देन आई रिफ्लेक्ट ऑन माई बकेट्स कि मैंने ये टाइम दिया या सिर्फ लिखने की हद तक है. सो मेक बकेट्स एंड देन refer back all the time. Wake up after a restful sleep, have breakfast with family, stay away from mobile and outer world for an hour in the morning. I'm going to explain that because that's what I do and a lot of people do it, and that is when you wake up in the morning for that very first hour, it is absolutely fine, it is a very good idea to stay away from your gadget. 1 घंटा कम से कम आपने मोबाइल को टच नहीं करना. You don't need to know कि कल का पाकिस्तान का मैच वो हारा या जीता, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया. You don't need to know कि पैलेस्टाइन में और कितनी डेथ्स हुई, क्योंकि वो आपके फ़ौरन मोबाइल पे चेक करने से ना कम होंगी ना ज़्यादा होंगी. ठीक है? अगर कोई मीटिंग स्केड्यूल हुई है तो वो 6 बजे चेक या 5:30, जितने बजे भी आप उठते हैं उस वक्त चेक करने से कोई इतना ख़ास फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला. 1 घंटा खुद को दें, ताज़ा हवा में सांस लें, चाय का कप अपने हस्बैंड के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, बहन भाइयों के साथ पी लें. आई यूज़ टू हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, राइट, इन दी ऑफिस, एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं सिर्फ 1
वक्त का खाना अपने बच्चों के और फैमिली के साथ खाती हूँ, वो डिनर, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट भी कर सकती हूँ, व्हाई नॉट? सो देन आई हैव नाउ स्टार्टेड टेकिंग ब्रेकफास्ट विद माई किड्स एंड फैमिली, दैट इज एट 6:30, because 7 o'clock पे उनकी वैन आ जाती है and they have to leave. So that one meal now I do with them. So we chit chat, I talk about their day, whatever. You just need some time with them. So that is a very very qualitative, productive time that I get to spend. I chose to spend with my family. I'm not going to touch my mobile. मैं अपने मोबाइल पे अलार्म नहीं लगाऊंगी, मैं उसके लिए घड़ी खरीद लूंगी अलार्म वाली, so that I do not touch my mobile. I do not get diseased with this FOMO, fear of missing out. So you don't need to know कि जापान में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, नवाज शरीफ की एंट्री हुई नहीं हुई, ज़मानत हुई नहीं हुई, वो 1-2 घंटे चीज़ें रुक सकती हैं. Spend some time with yourself, try it, it's not difficult, लेकिन आप नहीं ट्राई करेंगे, I know that. बट फिर भी मेरा कहना फ़र्ज़ है कि सुबह उठें, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो करके देखें कि 7:30 बजे तक आपने मोबाइल को टच नहीं करना. अगर आपको 1-2 दिन में हार्ट अटैक नहीं आता, इसका मतलब है सर्वाइवल चांसेस हैं. ट्राई इट. मे बी आपकी पेरेंट्स के साथ थोड़ी सी बॉन्डिंग बेहतर हो जाए, आपकी सिबलिंग्स के साथ थोड़ी सी बॉन्डिंग, या आपका अपना हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सा बेहतर हो जाए. ठीक है. What we are missing is introspection, जिस पे हमने उस दिन भी बात की थी, and self reflection. और उस दिन भी मैंने आपसे कहा था, the moment we have a few minutes भी थोड़ी बात है, 1 मिनट मिल जाए हमें, मोबाइल साथ ही बाहर. ठीक है. लिटरली 1 मिनट, बल्कि मिनट भी क्या, अभी हम बात कर रहे हैं और लगा है कि एक ही बात उसने 2 दफ़ा कह दी तो स्क्रीन. वी आर एडिक्टेड. सो जहाँ मोबाइल के बहुत फ़ायदे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड उसके शदीद नुकसानात हैं. इट डज़ नॉट अलाउ यू टू इंट्रोस्पेक्ट, इट डज़ नॉट अलाउ यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योर डे, ऑन योर थाट्स, ऑन वॉट यू हैव बिन डूइंग. सो एक दफ़ा करके देखें कि कुछ मिनट आपने नहीं निकालना. हाउ एवर यू नो द पुल दैट यू फील टूवर्ड्स टेकिंग इट आउट, मत निकालें. स्पेंड कर लें इनके साथ टाइम, 2 बातें कर लें. कुछ पूछने की समझ आई थी, क्या बात आपको बेहतर लगी, यार मैं उस बात से उनकी उससे डिसएग्री नहीं करती, क्यों नहीं एग्री कर रहे आप, ये वजह है, वो आपसे कोई बात कर ले. फॉर एग्जाम्पल, वी एट आवर होम हैव सेट time for this thing. After 9:30, mobile, if not buzzing because it's on vibration or pinging time and again, we are not going to check it. And now, because we have made this habit, people know, my family, my cousins, my relatives, my people, my neighbor, they do not even ring our bell after 9 o'clock. So at 9 everything is off, lights are off, television is off, everything is off, and people do not mind it now because they are okay, they have accepted the reality that they will not pick up my call, or if we ring a bell somebody is going to get angry because it's their off time. Okay? So you have to set your boundaries. It is going to help you, will give you more time for your reading, for your grooming, for your children, for your family members, or for your family. Yeah. Okay, thank you. So in this regard, I want to say that while you set your boundaries or priorities, so in this way, in other words, you are enhancing your productivity. So yes, you enhance your productivity. So for example, you are not getting distracted, so you are 100% on that thing that you are doing. For example, when I am reading newspaper, so then I put mobile away. You can say that on table or silent. Planning and organizing the key is the key to efficiency. आपने कहा कि आप journal बनाते हैं, and that's a marvelous thing to do. You should all have a calendar, और उसमें आप red color में जो आपकी चीज़ें priority पे हैं वो लिखिए, green में वो लिखिए जो आपके ख्वाहिशात हैं, the dreams that you have, that you want to do. कि मुझे कल थोड़ा सा शॉपिंग करनी नहीं है, लेकिन थोड़ी विंडो शॉपिंग के लिए मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे जाना है बाहर, ऑलराइट, और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है मुझे. सो वट एवर थिंग्स आर देयर. ब्लू में आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को लिखिए.
but have a journal, जैसे उन्होंने बताया, उनकी एग्जाम्पल आपके सामने है. So it helps and it is important to maintain it also. After every 15 days you can do, redo and refresh it. ये क्या है? Can anybody explain this now please? ये चीता जो है ना, ये हम है कि बस हम ही आग से गुजर सकते हैं. हमसे बेहतर तो कोई आग से गुजर नहीं सकता. कोई कोशिश करेगा तो जल जाएगा. So this is wrong. और लोगों को भी अपने साथ इस रिंग में से गुजारने के लिए सिखाइए, क्योंकि कभी आपकी एनर्जी, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ या टाइम बाउंड है आप किसी वजह से, तो कोई आपको रिप्लेस कर सके, कोई आपकी जगह थोड़ी देर के लिए ले सके. अब हम अपना, अगर मैं टेक्सटाइल में काम कर रही हूँ तो मैं अपने बेटे को अपनी जॉब तो नहीं सिखा सकती, ठीक है, बट व्हाट आई कैन डू इज़ delegate a few responsibilities. Because I have a very busy schedule and the time that I get after getting home, I want to give it to my family, I want to give it to my children and my husband. So मैंने क्या किया है, मैंने cooking की responsibility किसी को delegate कर दी है, मैंने cleaning की responsibility किसी को delegate कर दी है. और ऐसे ही आप अपने घर के तमाम अफराद को, बच्चों को स्पेशली, अपने siblings, छोटे siblings को आप delegate करें responsibilities. There is no harm in that. Number 1, इससे भी bonding create होगी, and number 2, they can help you. You can have some quality time with them, right? और उसके बाद आपके लिए और quantity आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपकी किसी ने responsibility ले ली. So I can give you another example that I have a session, I have a webinar, you know, in the evening. So because I have been very busy in the last week due to certain reasons, और मेरे पास टाइम नहीं है, वो टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग का ही है, आई हैव प्रिपेयर्ड इट, बट आई वांट समथिंग डिफरेंट, आई वांट समथिंग न्यू, बट आई डोंट हैव टाइम. अब ये हो सकता है कि मैं, आज सैटरडे है, 5 days a week आई हैव बीन रीचिंग होम एट 7, आज का दिन ऑफ है और मैंने क्या किया है, मैं यहाँ आ गई हूँ. सो माई चिल्ड्रन शुड किल मी, राइट? दे शुड बी वेरी एंग्री. और यही नहीं, फिर रात को भी एक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैंने एक वेबिनार रख लिया है. सो दे शुड बी एक्सट्रीमली एंग्री. और इस दौरान में मैंने उस वेबिनार की तैयारी करनी है. सो व्हाट डिड आई डू? आई कॉल्ड अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड आई सेड, दिस इज़ माई टॉक, दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, add more beautiful things, bring brevity, see what else you can add into it. I delegated. Now she can say or he can say कि इसका मुझे पैसे क्या मिलेगा, okay, I can pay. और वो ये भी सोच सकता है, समझ सकता है कि अच्छा, एक तो बनी बनाई प्रेजेंटेशन किसी की मिल गई, तो दैट्स अ गुड थिंग. नंबर 2, इसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे भी और थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, मैं और चीज़ों को पढ़ूंगी, वेबसाइट्स खंगालूंगी, मैं लोगों को सुनूंगी, एंड दैट्स माई सेल्फ डेवलपमेंट, दैट्स माई इम्प्रूवमेंट, एंड दैट्स अ गुड थिंग. ठीक है? सो बाय डेलीगेटिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आई विल बी एबल टू स्पेंड 3 से लेकर 8 बजे तक का टाइम नॉन स्टॉप विद माई children. And it is my habit, I do it. When I was, as a teacher, when I was with Paktak Marif students, I used to delegate a lot of responsibilities. To whom? To students. So I would tell them that these are your groups, this is your head. He's going to collect the copies, check your homeworks, make sure there are no errors, and then the copies would come to me. अब आप कहेंगे अच्छा टीचर ने अच्छा किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ा ली. But no. Because it was a competition and they were to get prizes, so the head would even go to their homes, would make them sit during the breaks and see, नहीं यार ये काम नीट नहीं, इसको erase करो, लिखो, you have to write it again because ऐसे कॉपी में सबमिट नहीं करवाने वाला. Or I would make, divide them in groups, I would give them laptops and I would say, okay, so आपका यहाँ पे जो भी favorite topic है, जिस भी चीज़ में आपका interest है, उसका topic निकालो, उसमें से 5 मुश्किल तरीन क्वेश्चंस निकाल लो, आप and then swap your question papers with each other. What are students doing? They have to do surfing, they will come up with an article, they will read it time and again because they want to make difficult questions, and then they have their answers also and they know they're going to get prizes. So मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे घर से जाके आर्टिकल्स नहीं निकालने पड़े, मुझे उनका क्वेश्चंस नहीं तैयार करने पड़े, मुझे उनके आंसर्स नहीं ढूंढने पड़े because they have done it for themselves. So this is called delegation, which is not just delegation but productive delegation. They are being trained on that.
right? And the parents are really happy when this is happening. So delegate your responsibilities. देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके अलावा भी कोई कर सकता है, जो करनी चाहिए हैं उनको. So do that. It is essential to train everyone in the household. Safety measures को सामने रखते हुए, मेरा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने अब 13 साल के बेटे को कुकिंग करना सिखा दूँ, पर जो कुछ मैं डेलीगेट कर सकती हूँ, I should. Reframing rest, embracing non-productivity, that you need time for yourself. अभी ये चीज़ें शायद आपसे इतनी रिलेट नहीं करी because I don't know आपकी कितने busy schedules हैं, but you don't have a lot many balls to juggle. अभी आपके पास कम हैं, ठीक है? जब आप work life में आएंगे, when you will have more responsibilities, when you will be married, when you will have children, when you have parents and in-laws, different families as well, then you will understand how many balls you have to juggle, and then you will understand the importance of leisure time, the importance of me time, और कितना ज़रूरी है कि वो आपने अपने लिए निकालना है. अभी वो शायद आप उसको रिलेट नहीं कर सकते उसके साथ. घर की टेंशन्स को ऑफिस में मत लेके आइए और ऑफिस की टेंशन्स को घर में मत लेके जाइए, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बाउंड्रीज जो आपने सेट की हुई, ये बाउंड्री काम की है, काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ की टेंशन्स अब यहीं रहेंगी, यहाँ की ईमेल्स, यहाँ के व्हाट्सएप अब नहीं, अब मैं घर आ गई हूँ, अब मैं बच्चा, चूल्हा, किचन और काम, no, I am not going to check my WhatsApp, I'm not going to see what my boss or what WhatsApp are going on. ठीक है? So you have to make sure that when you're setting your boundaries, you make sure that when you're at home, you are giving them quality time and you're there with them. ठीक है? So this is important. So it is quality over quantity.